father, why should he be prevented? Because, I mean, it also affects that person. I mean, you are the son of that murderer. I mean, you know, okay, it has societal consequences, it has family consequences. So but here we have the added problem that none of the legal heirs are coming forward. So let's not kill it completely. Let us keep it alive, the issue. 1898 में रुक गई बात. Maybe let's keep the issue alive. Because after all, it's a code of criminal procedure. No, what about... So it is not, technically speaking, I mean, you know, it has legal things, but we can look at certain constitutional provisions, the fundamental rights. I don't know if you can have an expanded discussion on Article 10A, right to fair trial, and appeal is incorporated in it, and appeal is a right, and sort of, you know, removal of a stigma is a right, and all that. वो तो एक दफा पंडोरा's box खुलता है तो फिर वो सारी चीजें मगर वो इस केस में हम कर नहीं सकते क्योंकि कोई for whom 10A मगर अगर आप उनके लीगल एयर होते तो आप सुन लेते मगर आप तो वकील हैं इस केस में. लीगल एयर्स क्योंकि नहीं है. In another service matter we've also said survivability रहती है स्टिग्मा की वजह से वगैरह वगैरह, लेकिन लीगल एयर्स must come and say that. उनके बगैर आगे एक तो वो सवाल प्रॉब्लम. दूसरा इसलिए मैंने 3 दफा I sought judgments inconvenience caused हुई उसकी वजह से. One is the fine in the sentence itself, but there could be other monetary consequences like pension and all. That's not covered. वो मैंने judgments, वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, ऐसी कई केसेस आए जहां पर उन्होंने कहा सर्विस बेनिफिट्स इफेक्ट हो रहे हैं, पेंशन इफेक्ट हो रही है. That's not covered. The honorable judges, वो हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं, मैं वो भी लिस्ट सबमिट करवा देता हूँ. 5 से 7 ऐसे केसेस हैं. They were not entertained. उन्होंने कहा number 1, it has to be punishment, that to fine. Even there is one landmark judgment, sir. आज तक एक जजमेंट आई है ऑथर्ड बाय हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अमजद रफीक ऑफ लाहौर हाई कोर्ट. इट इज अ वेरी एलैबोरेट जजमेंट, अ ट्रीट टू रीड एज वेल. ही हैज डेवलप्ड उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस सारी डिस्कस की है लॉ ऑफ अबेटमेंट, जिसमें ये सारे फैसले भी रेफर किए हैं. एंड व्हाट ही हैड ऑब्जर्व्ड उस केस में compensation थी, fine as well as compensation for 302, और compensation was also substantial 5 lakh rupees. Legal heirs came, were aggrieved, और उसमें लिखा हुआ है legal heirs were very anxious. स्टिग्मा वाली बात भी थी. उन्होंने कहा कि compensation भी 544 की नहीं आती because that is not punishment, that is a consequence. So consequence would not be entertained. It has to be, so punishment तो वो तो article 6 और नहीं. अगर हम इसकी constitutionality examine कर रहे होते on the basis of the legal heirs here, then this could have been a ground on the survivability of the issue, but वो है ही नहीं, सारा सवाल ही नहीं चल सकता. What would you say about section 561A of the criminal procedure code? जी लॉर्डशिप वो if you can first read it. जी inherent powers तो हैं. So but there's a specific provision. So Salman, all the provisions of the CRPC are subject to 561. वो तो होती हैं सर. Salman sir, please. Sorry, for my understanding. जी सर, please sir. This appeal has been filed under subsection 3 of section 12 of the Criminal Law Amendment Special Court Act 1976. Sir. How does the Criminal Procedure Code is attracted in case of this appeal? मैं अर्ज करता हूं. Because the special law does not say so. Your Lordship, I was anticipating that question and I have come prepared on that point. मैं assist करता हूं sir. So kindly see. पहली बात तो ये है. Section 431 refers to all appeals. Section 431 on 2 occasions refers to law to death. Death has been explained in the law of abatement. इस सेक्शन में 417 का भी जिक्र है, which is appeal against acquittal, कि वो भी अबेट हो जाएगी. जो जिस सेक्शन की तरफ जनाब इंडिकेट कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, 12(3), वो है any party who is aggrieved from the final order or judgment of the special court. So it could be an appeal against conviction, it could be appeal against acquittal. I think the question is whether criminal procedure code applies to that tribunal. Your Lordship. Yeah. Number 1, sir, definitions में section 2A CRPC applies. Special law
special law. Sir, first of all, I would refer to 2A. Section 13 पढ़ लीजिए. मैं 13 पढ़ लेता हूँ. ये जी ओवरराइडिंग इफेक्ट है सर. लॉर्डशिप, आपकी इजाजत से इससे पहले 12(3) में जिसमें अपील है, एनी पार्टी एग्रीव्ड बाय द फाइनल जजमेंट of the special court may prefer an appeal to the Supreme Court within 30 days of the passing of the judgment. So now this appeal has not been filed under any provision of the criminal procedure. It has been, sir. मैं अब यही justify करता हूँ. It has been filed कि under this वो कैसे? Your Lordship, this is 13 जरा पढ़ लीजिए. जी 13 sir. The provision of this act shall have effect notwithstanding anything contained in the Code, the Evidence Act 1872, or any other law for the time being in force. Overriding effect. Now, Your Lordship, my submissions to satisfy my Lord on that query would be, number one, this is not an appeal under Section 185. This is a direct appeal to the Supreme Court for the first time. This is a case of first impression. Never before anyone has been tried for high treason. And this law has been very rarely put into use. Very rarely. There are no reported judgments of this special law. Section 2A of the law, the opening lines, Code to govern the proceedings is CRPC. 2A. Then the entire case. 87 हुआ, 88 हुआ, 265K हुआ, 512 हुआ, 514 हुआ, 342 हुआ, वो सब का सब यहाँ रेगुलेट हुआ. दूसरा ये भी है कि जो 13 to my reading of 13 is that if there's any provision in this act which is inconsistent with the code, then code will not apply. So, but मैंने उसको उस एस्पेक्ट को भी Your Lordship देखिए. ये this is the one and only trial ever taken place pursuant to this law in Pakistan, sir. Naturally, yes. There is. Yes, sir. This is a case of first impression. Or now, can you come to the 561A? Unless you have to say more on this. Your Lordship, मैं इसको conclude कर देता हूँ कि इसमें अगर कोई मेरे पास और एक तो I would like to refer to the definition of abatement in blacks. आपने जो बात अर्ज की, आपने कहा कोड अगर इससे तसादुम रखता है तो ये लॉ प्रिवेल करेगा, अदरवाइज कोड के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं. रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं टेररिज्म पे, नैब की, एंटी करप्शन की, स्पेशल कोर्ट्स की, जितनी हैं, द प्रिंसिपल इज विद डेथ. The corporal punishment, monetary nahi hai sir, are exacted from the body. The body is no more. The appeal will abate. It will not continue. Continuance is a possibility if family steps in through Supreme Court rules, through a formal application. That too. आज sir family आ भी जाती. The law of the country does not permit the family. This is my speaking for myself. Unless my lords would permit them, stigma ground पर फाइन नहीं है. जब फाइन नहीं है तो फैमिली आ भी जाए. नहीं, वो हम देखिए, हम दरवाजा बंद नहीं करना चाहते हैं. हम उधर आज हमें ऐसा देखिए, एक बुनियादी असूल ये होता है कि मफरूजों के बेसिस पे आप फैसले ना करें. जी सर. तो कल किसी की राइट चली जाए और वो कहेंगे जी आपने तो अपने आप पे ये तो एक्चुअल कोई आएगा लीगल एयर्स वो शायद ये पॉइंट रेज करे, तो हम इसको दरवाजा बंद नहीं करना चाहते हैं. ये तो आपको वाज़ेह तौर पे कर दें. मगर मैं सिर्फ वजाहत के लिए आपसे पूछ रहा हूँ, 561A में अगर हम दरवाजा खोलना चाहते तो वही लीगल अर्ज खोलते, मगर हम 561A का सहारा लेकर के शायद खोल सकते या नहीं खोल सकते. ऐसी आपकी सिंस आप मौजूद हैं और माशाल्लाह काफी महारत है क्रिमिनल लॉ में, इसलिए हम आपका प्रेजेंस का फायदा उठा रहे हैं. प्योरली एकेडमिक. आई मस्ट